Hello everyone, this is your chemistry class. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकेंड ईयर कोर्स का तुम्हारा जो चैप्टर चल रहा है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, तो उसी में हम लोग आज इस चैप्टर के लास्ट पार्ट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो सेकेंड सीरीज है 5F सीरीज, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कल के क्लास में हमने केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड्स पे डिस्कस किया था और उसके अलावा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में लैंथेनाइड्स का क्या यूज है इस पर डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम 5F सीरीज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के 5F सीरीज या एक्टिनाइड्स के बारे में बात करेंगे। तो कंप्लीट इस चैप्टर के साथ हमारे पीरियडिक टेबल की स्टडी कंप्लीट हो जाएगी। तुम लोगों ने पीरियडिक टेबल और पीरियडिसिटी 11 में पढ़ा था, उसके अलावा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन और एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी की थी। पी ब्लॉक, इस ब्लॉक में तो दो ही ग्रुप है। पी ब्लॉक में 13 ग्रुप तक की स्टडी, 14 ग्रुप तक की स्टडी हुई थी। उसके बाद 15, 16, 17 एंड 18 ग्रुप की स्टडी यहाँ पे तुम लोगों ने किया। और नोबल गैसेस के बारे में 17, 18 ग्रुप तक की स्टडी हुई। उसके बाद हमने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, उनके कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी की। और उसके बाद एफ डी ब्लॉक के बाद एफ ब्लॉक पे आए हम लोग, और एफ ब्लॉक में लैंथेनाइड सीरीज की केमिस्ट्री हम लोग बता चुके हैं तुम्हें हम, उसके बारे में तुम्हारी कंप्लीट नॉलेज हो गई होगी लैंथेनाइड्स की। आज हम एक्टिनाइड्स यानी 5F सीरीज पे डिस्कस करेंगे। तो नाउ F ब्लॉक एलिमेंट्स, एक्टिनाइड्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्टिंग AC, TH यानी थोरियम, पैलेडियम, यूरेनियम which occurs in nature in uranium minerals, all the remaining actinides are unstable and synthetic elements. All actinides are radioactive. Actinides are analogous to lanthanides, and these have been made by artificial nuclear transmutations. Actinides are analogous to lanthanides and involve the filling of 5F orbitals. The following general characters are actinides. First है electronic configuration. In lanthanides, after lanthanum, the 4F orbitals become appreciably lower in energy than the 5D orbitals. Thus, in lanthanides, the electrons fill the 4F orbital in a regular way with minor differences, where it is possible to attain a half-filled shell. Similarly, it might have been expected that after actinium, 5F orbitals would become lower in energy than the 6D orbitals. However, for the first four actinide elements, TH, PA, uranium, neptunium, the difference in energy between 5F and 6D orbital is small. Thus, in these elements and their ions, electrons may occupy the 5F or the 6D level, or sometimes both. Later in the actinide series, the 5F orbitals to become appreciably lower in energy. Thus, from Pu
Onwards, the 5F shell fills in a regular way and the elements become very similar. The most widely accepted electronic configuration of actinides are given in the अभी टेबल में दिया हुआ है. The general electronic configuration of actinides may be written as Rn रेडॉन जो कि नोबल गैसेस का लास्ट एलिमेंट है. उसके बाद 5F, F में 1 to 14 इलेक्ट्रॉन, 6D 1 to 2 एंड 7S2. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक शेल इसमें बढ़ गई. तो तुम्हारे लेंथेलाइड में ये 6S2 5D था और ये 4F1 14 था. तो यहाँ पे 5F1 to 14, 6 1 to 2 एंड 7S2. अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड्स है. पहला एलिमेंट है एक्टिनियम, Ac सिंबल, एटॉमिक नंबर है 89. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Rn यानी रेडॉन जो नोबल इनर 18 ग्रुप का लास्ट एलिमेंट है उसके बराबर का ये कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन. उसके बाद की जो दो ऑर्बिटल यानी 6D1 एंड 7F2. यहाँ क्या है F0, F में इलेक्ट्रॉन 0 है, इसको F0 लिख सकते हैं यहाँ. एंड 6D1 7S2. थोरियम 90, Rn 6D2 7. यहाँ भी F0, F1 F2 यहाँ होना चाहिए था लेकिन ये इरेगुलरिटी कही जाएगी. ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टिनियम की +3 और जबकि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो सकते हैं तो थोरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और +4 हो सकती है. उसके बाद है प्रोटैक्टिनियम, Pa 91 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे 5F2 6D1 7S2. ऑक्सीडेशन इसकी +3 +4 और +5 हो सकती है. यूरेनियम 92, F में इसके 3 इलेक्ट्रॉन 5F3 6D1 7S2. ऑक्सीडेशन इसकी +3 दो इलेक्ट्रॉन हटा के फिर +4 5 इलेक्ट्रॉन हटा के +5 और +6. मैक्सिमम कितनी हो सकती है +6. यूरेनियम के बाद नेपच्यूनियम 93 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक इलेक्ट्रॉन F ऑर्बिटल में बढ़ता जा रहा है. इसकी 1 2 3 4 5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है +3 से +7. प्लूटोनियम 94 एटॉमिक नंबर, F5F6 7S2. उसके पहले के कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेडॉन के बराबर होंगे. ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी भी यूरेनियम की तरह. उसके बाद है अमेरिकम 95 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Rn 5F7 7S2. ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 +4 +5 +6. Curium 5F7 6D1 7S2. ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +4. बर्केलियम 97 5F9 7S2. इस तरह से हम देख रहे हैं लाइन से एक इलेक्ट्रॉन. कैलिफोर्नियम में 5F10, इंस्टेनियम में 5F11 7S2. ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 +4 है. उसके बाद +2 +3 +2 +3 सब में. परफ्यूम में भी इसी तरीके से यहाँ पे 5F4 12 इलेक्ट्रॉन. अगला एलिमेंट है Md जिसका सिंबल है, इसमें 5F13 7S2. उसके बाद निबेलियम NO 102 एटॉमिक नंबर 5F14 7S2. और लास्ट है लॉरेंशियम Lr जिसके कि इन दोनों के ही F ऑर्बिटल यानी 5F ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ दी हुई है. तो इस तरह से ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट सबके यानी एक्टिनाइड जो एलिमेंट है सबके यहाँ पे दिए हुए हैं. All the actinides have common 7S2 configuration and variable occupancy of 5F and 6D subshell. Electronic configuration में देखा. The filing of
Filling a 5F subshell start from protactinium and not from thorium as expected. The irregularities in electronic configuration are related to the stability of F0, F7 and F14. कुछ शुरू के एलिमेंट में F0 इलेक्ट्रॉन थे, F में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, वो स्टेबिलिटी के लिए था. F0 होगा तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एलिमेंट स्टेबल होगा, या हाफ filled orbital F7 या full filled F14. For example, the configuration of AM, CM, NO and LR are AM का 5F7, 7s2, CM 5F7, 6p1 and 7s2, NO 5F14, 7s2, LR last element है 5F14, 6p1, 7s2. Though 4F and 5F orbitals are similar in shape, but 5F is less deeply buried in comparison to 4F. Hence, 5F electrons can participate in bonding. Electronic configuration के बाद oxidation states. The known oxidation states of the actinides element are shown in the table. वहाँ देखा तुम लोगों ने mostly +2, +3, +2, +3 oxidation state is more common. उसके अलावा कुछ एलिमेंट्स में +3 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट भी है. Then the +3 oxidation state is more common like lanthanides. However, this state is not always most stable as for the first 4 elements, PH, PA, U and NP. For example, uranium 3 plus is readily oxidized in air and in solution. +3 state is the most stable state for the later elements AM to LR. यहाँ भी exception है rebellium का. The most stable oxidation state for the first 4 elements are +4, +5 and +6. Thorium +4, Pa +5 and uranium +6. These high oxidation states involve using all the outer electrons including F electrons for bonding. Though NP shows +7 oxidation state, but it is oxidizing, and the most stable state for MP is +5. Pu shows all the oxidation state from +3 to +7, but the most stable is +4. सारी चीजें टेबल में दी हुई है सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट. All AM shows oxidation state from +2 to +6. AM2 plus has an F7 configuration. It is the analog of EU2 plus, but it only exists in solid state as fluoride. However, for AM and almost all the remaining elements, +3 state is most stable. Now, +4 oxidation state exists for all the elements from TH to PK. CF2 plus, ES2 plus, FM2 plus, MD2 plus, NO2 plus exist as ion in solution. Their properties are like alkaline earth metals, particularly barium, and it is the most stable for NO and corresponds to an F14 configuration. +5 oxidation state occurs for the elements Pa to An. A few solid compounds are known in +5 oxidation state, but M5 plus ion do not occur in solution. However, MO2 plus ions exist between pH 2 to 4. These ions disproportionate rapidly in solution. इस तरह से 2O2 प्लस यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट सॉल्यूशन में ये
4+ U 4+ आयन बनाता है और साथ में UOO2 2+ 6 ऑक्सीडेशन यहाँ पे यूरेनियम की और वाटर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट occurs as chlorides MF6 for the element UNP, PU, and MAM. The +6 state is more widely found in the deoxo ion, not diaxo ions, MO2 plus. MO2 2+. The ion is stable and exists both in solution and in crystal. The 5f orbitals extend into space beyond the 6s and 6p orbitals and participate in bonding. This is in direct contrast to the lanthanides where the 4f orbitals are buried deep inside in the atom, totally shielded by outer orbitals and thus unable to take part in bonding. The participation of the 5f orbital explains the higher oxidation state shown by earlier actinides elements. The lower oxidation states tend to be ionic and the higher ones are covalent. M2+, M3+, and M4+ ions are known. Hydrolysis of these ions occurs quite readily but can be suppressed by using acid solution. Hydrolysis of compounds in the higher oxidation state gives +5 MO2 plus ion and +6 MO2 2+ ion. Now, these are the electronic configurations and oxidation state, discussion on the oxidation state of actinides. Now, physical properties of actinides. The actinides elements are all silvery metals. The melting points are moderately high but are considerably lower than those of transition elements. The size of the ion decreases gradually along the series because the extra charge on the nucleus is poorly screened by the F electron. This result is an actinide contraction similar to lanthanide contraction. Actinides have high densities. Some properties of the actinides up to berkelium are tabulated here. Not much information is available about heavy actinides. Melting points, thorium का 70 यहाँ से ग्राउंड देख सकते हैं. मेल्टिंग पॉइंट एक्टिनाइड्स में डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. दूसरे एलिमेंट का अपन 1552 फिर 1130 इस तरह से मेल्टिंग पॉइंट लगातार कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर ये यहाँ तक प्लूटोनियम तक कम होने के बाद फिर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया, फिर ये डिक्रीज कर गया. तो ये कोई ट्रेंड नहीं है इंक्रीज या डिक्रीज का. उसके बाद डेंसिटी लगातार यहाँ तक बढ़ती है प्लूटोनियम तक. उसके बाद 2 एलिमेंट की कम हो जाती है, फिर बढ़ जाती है. उसके बाद है रेडियस में यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. रेडियस एटॉमिक रेडियस डिक्रीजिंग ऑर्डर में है एक्टिनाइड्स में. और उसके बाद M3+ आयन की रेडियस थी. उसके बाद है M4+ आयन की रेडियस. ये भी देख सकते हो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है सबकी का मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी और रेडियस ऑफ M3+ आयन एंड रेडियस ऑफ M4+ आयन इस टेबल में दी हुई है जो तुम्हारे सामने है. उसके बाद है कलर ऑफ द आयन्स. Actinides ions are generally colored. The color of the ion depends on the number of electrons present in 5f orbitals. The ions having no electron in 5f orbitals, that is 5f0 or 7 electron in 5f orbitals, are colorless. The ions having 2 to 6 electrons in 5f orbitals are colored both in the crystalline and in aqueous solution.
color is due to FF transition. Thorium plus iron TH4 plus iron जिसमें कि 5b F0 इलेक्ट्रॉन है F ऑर्बिटल में, तो ये कलरलेस होगा. U3 plus 5F3 इलेक्ट्रॉन रेड कलर. NP3 plus 5F4 electron purple. Pu3 plus 5F5 electron violet. AM3 plus 5F6 electron pink. CM3 plus 5F7 electron colorless. F0, F7 are colorless. U4 plus 5F2 green and NP4 plus 5F3 yellow green color. Now magnetic behavior. Majority of the ions of the actinides possess unpaired electrons, thus they are paramagnetic in nature. TH3 plus इसमें कि 5F1 है, PA4 plus 5F1, U3 plus 5F3, NP5 plus 5F2, PU4 plus 5F4, AM5 plus 5F4, etc. are paramagnetic. Cations of actinides which contains only pair electrons are dimagnetic, जैसे कि AC3 plus 5F0, TH4 5F0, U6 plus 5F0, LR3 plus F14, etc. are dimagnetic in nature. Now formation of complexes. Actinides have somewhat higher tendency to form complex compounds in comparison to lanthanides. This is due to their higher charge and smaller size of their ions. Most of the halides of actinides form complex compounds with alkali metal halides. Actinides form chelates with organic compounds such as EDTA and oxime. The degree of complex formation for the ions M4 plus, MO2 plus, M3 plus and MO2 plus decrease in the order. M4 plus degree of complex formation धीरे धीरे डिक्रीज करती जाती है इस तरह से आयन फॉर्मेशन के हिसाब से. Now chemical reactivity. On account of low ionization energies, the actinides are highly electropositive metals. They react with hot water and tarnish in air, forming an oxide coating. The metals react readily with HCl, but reaction with other acids are slower than expected. Concentrated HNO3 makes PH, U and Pu passive. The metals react with oxygen, the halogens and hydrogen. Actinides act as strong reducing agent. Now radioactivity. All the actinides elements are radioactive in nature. Now last point of the topic, use of actinides. Uses of actinides. Thorium, uranium and plutonium are three actinides which find use as such for in the form of compounds. First, uses of thorium. When thorium dioxide containing 1% CEO2 is heated in gas plate, it emits a brilliant white light. Because of this, it is used for making incandescent gas, ventless. The mantle made from silk fiber is treated with a mixed solution of 99% thorium nitrate and 1% cerium nitrate. When this mantle is fixed in the lamp and ignited, the silk fiber burns away, leaving behind a network of thoria and ceria. Naturally occurring thorium is almost entirely pH-232. This isotope is not fissionable but is converted into U-233, which is fissionable. थोरियम न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट इस पे करते हैं. ये रिएक्शन पढ़ा है तुम लोगों ने रेडियो एक्टिविटी में.
तो ये पहले 9233 थोरियम में कन्वर्ट होता है, फिर बीटा एंजन के साथ ये PA 91233 में, और उसके बाद ये 92 यूरेनियम 233 में कन्वर्ट हो जाता है. Thus thorium is used for the production of fissionable material needed for atomic reactors. Thorium salts are used in medicines for the treatment of cancer. Now, uses of uranium. The salt of uranium find use in glass industry for imparting green color, textile industry, ceramic industry, and in medicine. The U-235 uranium-235 isotope is used as nuclear fuel in atomic reactors and atom bombs. Now, uses of plutonium. Plutonium-239 is used as a nuclear fuel. It is obtained from U-238. Now, comparison of actinides and lanthanides. Both lanthanides and actinides are F block elements, that is, they involve filling of the F subshell in the anti-penalty made shell of their atoms. Their general electronic configuration can be written as N-2 F114 N-1 D01 NS2, where N is equal to 6 for lanthanides and N is equal to 7 for actinides. Due to similar electronic configuration, they show similarities in properties but differ also in some of their characteristics. So first we see the similarities of lanthanides and actinides. In the atom of elements of both the series, 3 outermost shells are partly filled, while the remaining inner shells are completely filled. जैसा कि अभी general electronic configuration में देखा, 2 electrons are present in the outermost energy shell. 18 or 19 electrons are present in the penultimate energy shell. That is N-1 S2 P6 P01 021, and next to the penultimate shell contains 18 to 32 electrons, that is N-2 S2 P6 D10 F1 to 14. However, in two elements, lutetium and lawrencium, the F subshell is completely filled. These are the end members of the two series. The elements of both the series show mainly +3 oxidation state. The elements of both the series are electropositive in nature. They are reactive metal and act as strong reducing agent. In both the series, there is a contraction in atomic and ionic size as the atomic number increases. That is like lanthanide contraction, there is actinide contraction. These contractions are due to the poor shielding effect between the electron residing in N-2 F orbitals. The elements of both the series are electropositive in nature. They are reactive metals and act as strong reducing agent. Cations with unpaired electrons in both the series are paramagnetics. Most of the cations of lanthanides and actinides are colored. The cations having same number of unpaired electrons have almost same absorption spectrum. Sharp line-like bands are observed in both the series. These are due to the jump of an electron from the one energy level to another within N-2 F orbital. The nitrates, perchlorates, and sulfates of trivalent actinides as well as lanthanides are soluble, while the hydroxides, carbonates, fluorides of the elements of both the series are insoluble. Ion exchange behavior is exhibited by both actinides and lanthanides. Now, dissimilarities. Differences in some of the characteristics of lanthanides and actinides are given in the table.
तो सिमिलरिटीज देखा अभी हम लोगों ने। अभी इसमें हर चीज टेबल में हमको सिर्फ डिसिमिलरिटीज देखनी है। तो लाइट चली गई थी बीच में। तो डिसिमिलरिटीज देखते हैं। एक्सेप्ट promethium, all the remaining lanthanides are non-radioactive, while all the actinides are radioactive. Second is similarity is beside +3 oxidation state, lanthanides in some cases show +2 and +4 oxidation state, while actinides +3 oxidation state. Actinides show a variety of oxidation state like +2, +4, +5, +6 and +7 also. Lanthanides do not form oxo ions, but actinide forms oxo ions such as UO2+, PuO2+, UO+, UO2+, etc. These ions are stable in acid and aqueous solution. Fourth point, lanthanides, oxides of lanthanides and hydroxide of lanthanides are less basic, while oxides and hydroxide of actinides are more basic. Lanthanides have less tendency to form complex compounds on account of low charge density, while actinides have more tendency to form complex compounds on account of high charge density. The magnetic nature of lanthanides can easily be explained, while the magnetic nature, that is paramagnetic nature of the actinides, cannot be explained easily. The observed values usually do not tally with expected value. Most of the tripositive ions are colorless in lanthanides, but most of the tripositive and tetrapositive ions are colored. So now this is the end of D and F block elements. Study of D and F block एलिमेंट अब इस तरह से खत्म हुई, और साथ ही में चैप्टर भी तुम लोगों का ये खत्म हो गया। तो अब इसकी एक्सरसाइज और इसके नोट्स बनाने पे ध्यान दो। पढ़ने के बाद इसके नोट्स बनाओ और फिर उसके बाद इसकी एक्सरसाइज।